So, very good evening, friends. Actually, very good evening, friends. I would request Mr. Rajshekharan to please start the case study. yes, sir. Shall I start from beginning, sir? Yes, sir. Please. Yes, sir. Good evening. Ishwar Switchgears corporate data was incorporated in the year 1985. It is classified as non-government company and has its registered office in Mumbai. Registered office at Mumbai. It has one manufacturing unit in Pradhumpur, Indore, Madhya Pradesh, and a principal office in New Delhi. As per MCA record, its authorized share capital and paid up capital is 500 crores. Authorized and paid up capital is 500 crores. It carries on the business of manufacture of ME switchgears and EPC project for energy utilities. The directors of Ishwar Switchgears Limited are Hitesh Rana and Raman Thapa. The directors were Hitesh Rana and Raman Thapa. One of the financial creditor, Allied Bank, has filed an application for initiating CIRP of Ishwar Switchgears. One of the financial creditor, Allied Bank. Allied Bank is a financial creditor. They have initiated the CIRP Ishwar Switch against the CD Ishwar Switchgears for defaulting on the loan of rupees 30 crores under section 7 of the IBC. So financial creditor filed the case. The adjudicating authority, after issuing the notice to the CD, passes an order of admission on 30th August 2020. So it is initiated and accepted by the AA. Mr. Ranjit Kare was appointed as an interim resolution professional on the same day. Mr. Ranjit is an IRP. Mr. Ranjit Gar prepared the list of creditor and formed the committee of creditors. COC later appointed Ranjit Kar as the RP. The same IRP is appointed as the RP. Second page. Second page. Just a minute. एक मिनट. राजीव गुलाटी जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज. आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है. अभी करते हैं. ये अच्छा ये हो गया. अच्छा नेक्स्ट पेज. जस्ट अ मिनट. दिस इज द नेक्स्ट पेज. हाँ जी. प्लीज रीड सर. नेक्स्ट पेज. It is not moving, sir. It is gone. Second page आ गया. सेकंड पेज आ गया. Ishwar Switchgears Limited has provided a guarantee to Standard Metals. So the CD has given a guarantee to he's one of the supplier to Standard Metals. He has given a guarantee against a loan of rupees 75 lakhs given by Apex Banks, which assets which Standard Metals Private Limited has defaulted. The supplier has filed, so the bank guarantee is dishonored. So the issued bank guarantee Apex Bank has lodged a claim on Ishwar Switchgears Limited against the guarantee. So bank guarantee is in a file invoked. So the bank Apex Bank is Apex Bank is in a picture. Apex Bank has approached the RP to include them as FC in the CIRP of Messrs. Ishwar Switchgears Limited. Apex Banks now telling to include him as a financial creditor by submitting his claims. The RP has took up the matter with his ROs, COC, who returned it to the RP to decide. COC back to RP to decide. RP turns down the request of Apex Bank to include them as one of the creditors. So RP turns out to include them as one of the creditors. The RP prepared the information memorandum as per section 29 of IBC and regulation 36 and appointed two registered valuer as per regulation 27 for determining the fair value and the liquidation value of the corporate debtor in accordance with the regulation 35. RP appointed the two registered valuers. The RP shares the information memorandum with the COC after
taking undertakings for the confidentiality. After taking the confidential, he has shared the further information memorandum he shared. One of the COC members asked for the details of valuation of the assets of the CD to the RP. Valuation report is one of the COC member is asked, which RP does not provide. It's correct actually. Next page, sir. The RP published the UOA Form G in English and the regional language. That page, sir. Next page. So the UOE is published and in form number G, it is published in the two, one English and vernacular, it is published actually. The RP received response from 6 resolution plan in proper format to the published UOA. One of the resolution plan is a member of the COC. One resolution plan come from the COC member itself. Out of 6 resolution plan, 3 resolution plan, including the member of the COC, are shortlisted by the RP. Out of 6, 3 is shortlisted by the RP, and the provisional list of eligible resolution plan is submitted to COC and to all resolution applicants, prospective resolution applicants. Yes. So 6 received, 3 has shortlisted, of which one is a COC member. He is submitted to the COC. That is a mistake. Out of the 3 rejected prospective resolution plans, 1 prospective resolution plan raises the objections, which are clarified by the resolution RP. The RP issues us the final list of prospective resolution applicant to COC. The RP issues RFRP along with the IM and the evaluation matrix to the shortlisted prospective resolution applicants after getting requested undertakings for confidentiality. Further, after the one shortlisted, he has given the information memorandum and the evaluation matrix he submitted with the approval of the COC. The RFRP stipulates the requirement of the performance of the bank guarantee to be submitted by the successful resolution applicant as per the regulation 36A 4A section for 15% of the amount payable to the creditors. 15% amount payable to the creditors, valid for at least 18 months or till completion of the implementation of the resolution plan, whichever is later, with a provision for the forfeiture of performance security or invocation of the bank performance guarantee in case of breaching of any of the conditions of the resolution plan for violation of the code or the regulation by the successful resolution applicant. Resolution applicant. Next, please. Yes. Based on the evaluations, the resolution professional find 2 plans do not meet the necessary evaluation criteria and shortlist 1 resolution plan that meet the evaluation criteria. 6 applications received, 3 shortlisted, 3 it is submitted to the COC, 3 has only 1 is further. Based on the evaluation of RP, 2 plans do not meet the necessary evaluations and shortlisted 1 resolution plan that meets the evaluation criteria. In the shortlisted resolution plan, the provision of performance of bank guarantee is considered only for 10% of the amount payable to the creditors with validity of for 18 months. The resolution professional put up the shortlisted resolution plan for the approval by the COC, confirming the adherence to the rules and regulations of the IBC. COC approved the plan and the RP sent it to the AA for the final approval. But the adjudicating authority rejected the plan approved by the COC and direct IBBA to look into the conduct of the applicant and initiate appropriate action against the resolution professional.
So this is the So end of, AA rejects. this is the end of the case study. Yes. I hope everybody has gone through the case study. I think I have already shared it in the group. Yes, sir. Good. Yes, sir. Very good. Good. So Covering all anyone, the points. anyone who has not received the case study, Yes, sir. is there anyone here present here who has not received the case study? मुझे नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? आप तो ग्रुप में हो ना? हाँ मैं ग्रुप में हूँ सर, लेकिन देखिए नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आप- है सर। है? नहीं सर, नहीं है सर। This case study I am also not getting. Even allied laws का जो I am आपने also not got, sir. एक allied laws, Yeah, it is there. है? It is there in a different. It is there, January sir. 23 IBC batch में है। हाँ? कौन सा? February 23 January 2023 IBC बैच में भेजा है। भेजा? एक अभी भेज second। देते हैं। उसमें भेजा है। It's there, sir. है? It is there. It is there, sir. We received, It is sir. there. We received. This Yeah. is it is there. जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट। नहीं अभी सर, मुझे नहीं मिला। अभी देख लेते हैं। अभी एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक के ना अभी देख लेते हैं एक बार इसको। ओके ओके यस, हाँ यस प्लीज, हाँ जी। Please read H also. Any counter indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, documentary letter of credit, or any other instrument issued by a bank or financial institution. So it falls under that. Will it be covered under this? This. तो गिरीश जी आप जो बोल रहे थे कि नहीं है फाइनेंशियल डेट नहीं आएगा तो सर ये एक मैं I took this No, from no, a- Girish ji is gone on the time value. नहीं No, टाइम let वैल्यू me तो ठीक explain. है। Let me explain. Okay. If you hold for some time. यस यस Actually, I am referring to one. This is one document available. It's in handbook. It is available on the IBBI site. It is Okay. understanding the IBC. So what I can do is I can make you as a co-host and you can share it for the benefit of all. Okay. ये आपके then पास hard give copy me a है? second. Okay. हार्ड I कॉपी will नहीं, share it. सॉफ्ट कॉपी है ना आपके पास या हार्ड कॉपी है? है soft copy है. बस Give me a second. I will just open that. ओके। सो आई विल मेक यू co-host and then you can share your screen. Okay. I have made you co-host, so please share that thing. Yeah, 1 second, sir. Sure, you take your time. Okay, I'm sharing the screen. Let me stop share my screen and then now you can share. Please share. Are you able to see it? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। Yes, now it is okay. Yes. Okay. Hmm. So actually, I'm just referring to this particular document. Maybe I'll show the first page later. I'm just Okay. coming to this case. Okay. So I use this particular reference for Hmm. formulating that particular part. Yes, yes. So what it says that the issue before the Supreme Court was whether a creditor who has been given security by the CD for a third-party debt would be an FC under the IBC. Hmm. The Supreme Court observed that for a debt to become financial debt, the basic elements are that it ought to be a disbursal against the consideration of the time value of money. Hmm. It may include any of the methods for raising money or incurring liability prescribed in subsections A to F of section 5(8). Hmm. It may also include any derivative transaction or counter indemnity obligations as per subclauses G and H of section 5(8). It may also be amount of any liability in respect of any guarantees or indemnities for any of the items referred to in subclauses A to H. The requirement of existence of a debt that is disbursed against a consideration for time value of money remains an essential part of any of the transactions dealing stated in subclauses A to I of section 5(8), even if it is not necessarily stated therein. Hmm. The court added that for a person to be designated as FC of CD, it has to be shown that the CD owes the financial debt to such a person. Understood this way, it may become clear that a third party to whom the CD does not owe any
or financial debt cannot become its FC. Actually, this is just a synopsis. I will tell you the entire case. Correct. The entire case here was that there were two companies. One was JP Infratech and another was JP Associates, Jayaprakash Associates. Hmm. So JP Infratech was the company which was holding the land bank. Hmm. And JP Associates was the company which I think came this land was mortgaged to the financial creditors of JP Associates, to the bankers of JP Associates. JP Associates had taken a loan. Normally in construction companies, what happens is one company owns the land bank and the other company is the execution company. So in this case also, JP Infratech was holding the land bank and JP Associates was executing this project. So for execution of the project, JP Associates had taken loan for which this land bank was mortgaged as collateral security. Now, once this JP Infratech was into CIRP, so the financial creditors of JP Associates, they requested to you please include us also as financial creditors in CIRP of JP Infratech. So these were the facts of the case. Correct. Sir, this case study further is still there, means it's a continuation on the next page. So maybe I can read that. Yes, please. Okay. So the court delved into the unique position and role of FC with respect to the CD and observed that keeping the objectives of the IBC in view, the position and role of a person having only security interest over the assets of the CD could easily be contrasted with the role of an FC, because the former shall have only interest in realizing the value of its security, there being no other stake involved, and least of all any stake in the CD's growth or equitable liquidation. While the latter would, apart from looking at safeguards of its own interest, also and simultaneously be interested in the rejuvenation, revival, and growth of the CD. The court held that a person having only security interest over the assets of the CD, even if falling within the description of secured creditor by virtue of a collateral security extended by the CD, would nevertheless stand outside the sect of FC. Hence, if a CD has given any property in mortgage to secure the debts of a third party, it may lead to a mortgage debt, and therefore it may fall within the definition of debt under section 310 of the IBC. However, it would remain a debt alone and cannot partake a character of a financial debt within the meaning of section 5.8 of IBC. But Girishji, what I would like to say here is that this is a case of mortgage. But the Actually, case, I had. but okay. Ek minute, Girishji. But the case we are discussing is not the case of a mortgage. In our case, there is no mortgage. They have given a guarantee. But how does it makes a difference, sir? Sir, Basic contention here is, गारंटी sir. तो जाती है सर, मॉर्गेज जो देता है उसमें गारंटी तो इशू होती है नॉर्मली. Correct. And our contention is क्या है कि there being no other stake involved, at least of all a stake in growth and equitable liquidation. हाँ, अगर हम if we take a cue from this, मैं अब इसको stop कर दूं? हाँ चलेगा सर. है ना? हाँ, इसको stop करके let me share my screen. ये जो है ये हाँ, तो अभी अगर हम देखें, now let us read these facts again. ये वाले facts दोबारा पढ़ते हैं एक बार पढ़िए राजशेखरन जी. First two paragraph. Ishwar Switchgears Limited had provided guarantee to Messrs. Standard Metals Private Limited against a loan of ₹75 lakhs given by Apex Bank, which Standard Metals Private Limited has defaulted on, and Apex Bank lodged claim on Ishwar Switchgears Limited against the guarantee. The guarantee is invoked here. Here invoked, hence the financial guarantee. Hence is a financial guarantee. Whereas a Jill and Joel case, it's a purely a mortgage actually. अच्छा ऐसा Girish ji, what we can do is we can read the definition of corporate guarantor also.
Let us Okay, read the definition of corporate guarantor. okay. So definition of corporate guarantor is given in section 5, subsection 5A, which says corporate guarantor means a corporate person who is the surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. ठीक है? So by means of this Ishwar Switchgears is a corporate guarantor. Yes. ये गारंटर हो गया Okay. ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. But And now- corporate guarantor to Standard Metals. वो तो नेचुरल है, उसी का ही होगा. Correct, correct. हाँ. ठीक है? अब आप Yes, sir. कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन भी पढ़ लो. कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन भी होगी ना, या डेटर की डेफिनेशन भी होगी. देखो, पढ़ो जरा एक बारी, वो क्या बोलता है. एक मिनट. सर मेरे क्लाइंट के केस में सिमिलर हुआ था. अरे एक मिनट, अरे हाँ. सर ऐसा है, लेट अस गो बाय बुक ओनली. हाँ. Three- Yes, sir. Corporate debtor means a corporate person who owes a debt to any person. ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो आप? 3(8). 3A8. अच्छा 3(8) पढ़ रहे हो, ठीक है. तो 3(8) में क्या बोलता है? 3(8) में बोलता है यस, हाँ, कॉर्पोरेट डेटर मींस ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन. अच्छा, और ये भी कहीं लिखा है कि डेटर इंक्लूड्स ए गारंटर. डेटर की डेफिनेशन एक बार देखना. डेटर की कहीं डेफिनेशन डिफाइंड है इसमें? क्रेडिटर ये तो सर कॉर्पोरेट के लिए डील कर रहा है ना, इसलिए इसमें तो और कोई होगी नहीं. नहीं सर, तो क्रेडिटर का एक डेफिनेशन है. क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू whom a debt is owed and includes a financial creditor, an operational creditor, a secure creditor, an unsecured creditor, and a decree holder. And debt means liability or obligation in respect of a claim which is due from any person and includes a financial debt and operational debt. So मेरे ख्याल से सर वो जो इसका जो केस स्टडी जो हमने अभी देखा था जेपी इंफ्राटेक वाला, उसमें दिस कैन कम एज अ डेट बट दिस अपेक्स बैंक कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रेडिटर्स. I think this is what I felt. Maybe I'm wrong because I'm absolutely new with this. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. सर जो अच्छा, अब एक मिनट, H और I है. Pleasant and safe drive, and don't forget to wear seatbelt. हाँ, बोलिए. हेलो. हाँ सुनील जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था 5(8) H और I को कैसे डिफाइन करेंगे? I forgot every day I don't put मीठा चटनी. देखो ऐसा है, 5(8) Very good. H जो है 5(8) H बोलता है एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन in respect of a guarantee, indemnity, bond, documentary letter, or any other instrument issued by a bank or financial institution, amount of any liability in respect of any of the guarantee or indemnity for any of the items. तो आई में तो काउंट हो ही जाएगा ये. हाइट में काउंट होना चाहिए. आई में बिल्कुल आई में होता है. बिल्कुल होगा. और मेरे को भी ऐसा लगता है, आई ऑल्सो एग्री टू दिस व्यू कि भाई ये जो है फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल डेट के अंदर आ जाएगा. बट अभी ऐसा है, फॉर द टाइम बीइंग लेट अस पार्क दिस क्वेश्चन. ठीक है, वी कैन फर्दर डिस्कस इट इन द ग्रुप. देखो ऐसा, जैसे मैंने वो फैक्ट्स बताए आपको, जेपी इंफ्राटेक एंड जेपी एसोसिएट्स, फैक्ट्स वर ए लिटिल डिफरेंट. वहां पर क्या है कि मॉर्गेज की बात है. कोई जरूरी नहीं है कि वो बैंक गारंटी जो है, बैंक गारंटी समटाइम्स इज नॉट बैक्ड बाय मॉर्गेज ऑफ सिक्योरिटी. मॉर्गेज अलग चीज है, कोई जरूरी थोड़ी है. कई बार क्या होता है, अगेंस्ट मार्जिन जो है बैंक गारंटी का आपके पास फैसिलिटी रहता है. Against 25% margin, they issue you bank guarantee without any mortgage of any security. We cannot presume कि भाई ईश्वर स्विचगेयर ने कुछ mortgage भी किया होगा. There the facts were different. वहां पर facts क्या हैं? वहां पर facts इतने वो नहीं है. यहाँ पर क्या है, ये क्या बोल रहा है, कोई there is no mention of any mortgage. उसने गारंटी दिया. भाई ईश्वर स्विचगेयर, सपोज बैंकर्स के साथ फैसिलिटी है, भाई इतना सीसी है, इतना आपका एलसी होगा, इतना बैंक गारंटी का लिमिट होगा. फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड रहता है ना लिमिट्स. तो नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, दे आल्सो सैंक्शन दीज लिमिट्स कि भाई पीजी इतने का आप ले सकते हो. वो उसके कुछ मार्जिन ले लेते हैं, 10%, 20%. कोई जरूरी थोड़ी सिक्योरिटी रहता है उस पर. So you meant to say this is as good as a bank guarantee issued to any other debtor, any हाँ. other, like maybe they are doing some contract and performance guarantee. और आप ये देखो ना, ऐसा है, उसका तो उसने तो लोन ही लिया है ना. स्टैंडर्ड मेटल ने क्या लिया? स्टैंडर्ड मेटल ने तो फाइनेंशियल डेट ही तो लिया है. जब फाइनेंशियल डेट लिया, एंड इफ वी सी 5(8) I,
58 क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द गारंटी और इंडेमनिटी फॉर एनी ऑफ द आइटम्स। ऐसा है जो अपना डेट ले लेगा, अपने डेट की तो गारंटी कोई देगा नहीं। आप इसको ऐसे समझो, देखो अगर ईश्वर स्विच गियर अपना लोन लेगा, अपने लोन की ही कोई गारंटी देगा क्या? ऐसा तो नहीं लेता ना। गारंटी तो हमेशा दूसरे के लोन की दी जाती है ना। अपने लोन, अपना ही लोन लिया, अपनी ही गारंटी दे दीजिए तो कुछ तुक नहीं बनी ना। नहीं सर ऐसा हो सकता है ना सर कि वो बैंक गारंटी अपना दे सकता है ना वो। सर See, ऐसा अगर वो मैं नॉर्मली लोन लेता हूँ तो उसके अगेंस्ट में गारंटी। सर कैन आई मेक अ पॉइंट? यस 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 Sir, this Apex Bank has to take action against Standard Metal Private Limited. Then only the guarantee comes in, no? नो नो नो, No, एक्चुअली sir, no, sir. नहीं मिस्टर जेम्स, Primary. नहीं ऐसा कुछ There नहीं is है। no primary and collateral. देखिए ऐसा है Guarantor No, no. has to have the मिस्टर What I'm जेम्स, saying- as per the provisions of Indian Contract Act, liability of the guarantor is coextensive with that of the borrower, and That it is is the true. borrower's option whether he Hmm. wants to proceed against the guarantor or borrower. By suppose the borrower is a software company, it does not have any assets, so why they will proceed against the borrower? Because they already know borrower doesn't have anything. So Sir, why they will but- waste their efforts? You have but, to read section 60 also. No, Please that read is true, section sir. 60. But basically in banking, we move बैंकिंग को against छोड़ the... जाओ, नहीं वो छोड़ दो ना, वो बात छोड़ दो। अभी ऐसा we have to talk मैंने as per law. बैंकिंग में भी जो गारंटी का कॉन्सेप्ट आया है ना सर, हाँ वो मॉर्गेज के संग गारंटी का इसीलिए आया है टू मेक मॉर्गेजर पर्सनली लायबल टुवर्ड्स द लोन. The whole funda of bringing the guarantee with mortgage was that only for banking and. अभी ऐसा ना मिस्टर जेम्स, हम तो जाएंगे, सबसे पहले Okay. तो हमें कहाँ जाना है? We have to read IBC. IBC में ही we are getting the answer. Why will go to other Okay, acts? okay. है कि नहीं? Okay, sir. भाई हमारा 58I is giving the answer, section 60 is giving the answer. सेक्शन 60 में ये है ना कौन किसके अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। तो यू कैन प्रोसीड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जाएंगे हम, इंडियन, बिकॉज देयर इज अ मेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर श्योरिटी का डेफिनेशन पढ़ लो आप, श्योरिटी का पढ़ लो डेफिनेशन क्या बोलता है, पढ़ लीजिए एक बार। किसमें सर? यहाँ श्योरिटी का डेफिनेशन भी होगा ना, सेक्शन 126। नहीं वो तो आप वहां चले गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, यहाँ जाओ ना, इसी पे जाओ ना। यहाँ गारंटर का तो डेफिनेशन आपने पढ़ ही लिया ना, गारंटर का तो अभी पढ़ा ना हमने डेफिनेशन। कॉर्पोरेट गारंटर तो पढ़ा ना हमने। हाँ जी। हाँ तो श्योरिटी का भी डेफिनेशन होगा यहाँ, श्योरिटी डिफाइंड है कि नहीं? होगा, जरूर होगा। Corporate नहीं, guarantor sir. means, नहीं, corporate guarantor means a corporate person who is a surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. इतना ही हाँ है। हाँ 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 हाँ। अभी तो इस- surety का मतलब श्योरिटी नहीं है। अच्छा श्योरिटी नहीं है तो फिर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखना। surety नहीं है। Sir, I think equally good to prove our case as a. हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। तो लेकिन अपेक्स बैंक फिर क्या क्रेडिटर बन सकता है या नहीं बन सकता? आई मीन लेट अस कम टू दैट। बन सकता है। ओके। Subject to claim he can be. आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट पढ़ लो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या बोलता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 पढ़ लो, वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट से सिक्योर वैसा ही कुछ है। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मींस राइट, title or interest or a claim to property created in favor of or provided for a secured creditor by a transaction which secure payment or performance of an obligation and includes mortgage, charge, hypothecation, assignment and encumbrance or any other agreement or arrangement securing payment or performance of any obligation of any person, provided that security interest shall not include a performance guarantee. और secured creditor कौन है? Secured creditor means a creditor in favor of whom security interest is created. तो अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है सुनील, आई एग्री विद सुनील जी, जो 58I है 58I में कवर हो जाएगा। तो कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि कवर हो जाएगा? आप चलो ये बता दीजिए कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा कवर। एक तो गिरीश जी बोल रहे हैं नहीं कवर होगा, और गिरीश जी के अलावा भी कोई हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं कवर होगा?
but still we are parking the question, है ना, Okay. for discussion in the Yes. group, है ना? Yes, sir. ठीक है जी. So we'll come out with further facts on this case. एक मिनट, एक और पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं देखता हूँ जरा, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि केस स्टडीज तो डिस्कस हो ही जाएंगी, बट पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी रहता है. लेट मी सी हियर. ये मेरे पास आशीष मगीजा सर की बुक है जो मेरे गुरु हैं, तो मैं उसमें भी देखता हूँ. और ये बुक जो है जजेस भी पढ़ते हैं. सर ये बुक का ग्रुप में डाल देंगे एक स्क्रीनशॉट या हाँ, ये बुक मैं दिखा देता हूँ आपको. एक्चुअली क्या हुआ, ये बुक अपडेट नहीं हुई, ये जब आईबीसी आया था ना तब लिखी थी. ये वाली बुक जो है, इसमें क्या है, ये कमेंट्री है. ऑथर आशीष मखीजा. आशीष मखीजा. ओके. हाँ, और ये लेक्सिस नेक्सिस की बुक है. जो पब्लिशर है इसका लेक्सिस नेक्सिस. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. तो मेरे को तो कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें आईबीसी सिखाने वाले ही आशीष मखीजा सर हैं. इसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी में क्या लिखा था, फिर जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तब क्या था, पूरी हिस्ट्री से लेकर के सभी कुछ इसमें. आगे बढ़िए सर, वो दूसरा पॉइंट. हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात. ये आप ये देखिए, मेरे को लगता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए कॉर्पोरेट गारंटी और इंडेमनिटी बिकम्स ए फाइनेंशियल डेट है. इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा. वो बोलता है, इन ऑर्डर टू बी कॉर्पोरेट गारंटी और इंडेमनिटी टू बी कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल डेट, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. The guarantee or indemnity must be issued by the corporate debtor for any of the items under any of the clauses A to H. तो ये तो यहाँ नहीं है, कॉर्पोरेट डेटर ने तो गारंटी इशू नहीं की है ये. And the liability of the corporate debtor exists against the corporate guarantee और कॉर्पोरेट डेटर नहीं किया ना सर, गारंटी तो कॉर्पोरेट डेटर नहीं की है. कॉर्पोरेट डेटर ही किया. हाँ, बिल्कुल. ईश्वर स्विच गियर नहीं तो किए. बिल्कुल. प्रोवाइड गारंटी. हाँ, तो क्या बोलते हैं इसमें, बोलते हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली, द गारंटी और इंडेमनिटी मस्ट बी इशूड बाय द सीडी, तो सीडी ने इशू की है फॉर एनी ऑफ द आइटम्स अंडर एनी ऑफ द क्लॉज ए टू एच. और दूसरा क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एग्जिस्ट्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटी और इंडेमनिटी इशूड बाय द कॉर्पोरेट डेटर. और अभी लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड द लायबिलिटी अंडर द कॉर्पोरेट गारंटी और इंडेमनिटी इज ड्यू, ये लायबिलिटी ड्यू भी होनी चाहिए. तो तीनों कंडीशन हो गई हमारी, क्योंकि लायबिलिटी ड्यू अगर ऐसा है, अगर ये इन्वोक नहीं होती, had it not been invoked, then our liability would not have been due. तब नहीं आता, तब तो पक्का नहीं आता ना. Yes, but now since the guarantee has been invoked and it has remained unpaid because Standard Metals has defaulted, so now it has become due also. The test to determine a liability under a corporate guarantee or indemnity is a financial debt is to see whether it has become due. Unless it is due, it will not be considered as a financial debt. Thus, a person holding a corporate guarantee or indemnity which has become due is considered as a financial creditor for the purpose of the IBC. A financial creditor under the code enjoys many rights and privileges. The two significant rights are to initiate CIRP and once it is initiated, to be a part of COC. In order to initiate CIRP against a CD, financial debt must not only be due, but there must be default in payment of the debt.
The right to initiate CIRP vests in the financial creditor regardless of the fact whether default exists in respect of financial debt owed to him or any other financial creditor. The default in payment of the debt becomes the trigger point for initiating CIRP. A default occurs if there is non-payment of the liability, wholly or partly, arising out of the counter-corporate guarantee or indemnity in respect of the items under clauses A to H, which is due and payable by the CD. This presupposes that the liability on account of corporate guarantee or indemnity is due and payable. So once the CIRP is initiated, all financial creditors constitute committee of creditors. The only condition to be part of COC is that the creditor must be a financial creditor. तो इसमें क्या है? हाँ, तो I will post a screenshot of this also. अच्छा, एक और भी बात है. Bank holding corporate guarantee considered as a financial creditor by the tribunal. A question arises whether a bank or any other person holding a corporate guarantee or indemnity issued by a CD can be considered as a financial creditor. The answer to this question rests on whether the amount under the corporate guarantee or indemnity has become due. In a contract of guarantee or indemnity, the liability becomes due when the guarantee is invoked. In other words, the sum due under the guarantee of indemnity is demanded. Calcutta High Court in Road Machines India Private Limited versus Projects and Equipment Corporation India held that a bank guarantee is a commercial document and is neither a statutory notice nor a pleading in a legal proceeding. A bank guarantee may be invoked in a commercial manner. The invocation would be sufficient and proper if the bank concerned understands that the guarantee is being invoked by the beneficiary in terms of the guarantee. Generally, the invocation of bank guarantee happens upon issuing of a demand notice in writing. This is the crucial part of liability under the guarantee or indemnity becoming due. Allahabad bench of the tribunal did not go into these considerations in the matter of Axis Bank versus GODPL Limited, yet allowed the Axis Bank, a corporate guarantor, to be part of the COC, to participate and vote in its proceedings under peculiar circumstances, clearly stating that the order is not to be treated as a precedent for future reference to other cases. So it is submitted. अच्छा, तो ultimately इसमें यही है कि भाई he is a this amount has become due and payable. अगर गारंटी इन्वोक नहीं होती तो नहीं बन सकता था, बट गारंटी इन्वोक हो गई तो नाउ इट इज पेएबल बाय ईश्वर स्विच गियर्स, एंड वंस इट इज पेएबल बाय ईश्वर स्विच गियर, फाइनेंशियल डेट भी है ये, तो ये इसके अंदर आ जाएगा. Okay. To add something. Yes, yes. Sir, there is a case, Maharaja Theme Parks and Resorts, where Okay. similar issue had come up. And Okay. it held that the borrowers pay to repay dates, that dates becomes payable to them, to the financial creditor, and the guarantor said we are not financial creditors, but the NCLAT held no, you are. So you also agree to the view that he should be considered as a financial creditor? Yes, sir. तो अभी ऐसा है, I will put these facts also into the group, but still, मतलब we respect difference of opinion. अभी और we can discuss it further also, no issues. गिरीश जी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? तो देख लेंगे जैसा भी होगा. But अभी मैं तो सीख रहा हूँ. This is a citation. I can post the. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी 2 साइटेशन बताया आपको. एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ला बताया. Yeah, yes, sir. कलकत्ता हाई कोर्ट है, रोड मशीन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया. ये तो ठीक है, आगे चलते हैं, है ना जी? But based on what you discuss right now, I think it looks like Apex Bank can become one of the FCs. Yes. Okay. और वो जो फैक्ट्स है ना आपके, वो जेपी इंफ्राटेक वाले, आई एम अवेयर ऑफ दैट केस, मैंने आपको फैक्ट्स बताए ना, उसमें बेसिकली वो क्या था, वो बोला कि भाई लैंड हैड बीन मॉर्गेज टू देम, लोन वाज अवेल्ड बाय नॉट जेपी इंफ्राटेक बट जेपी एसोसिएट्स. लोन जेपी एसोसिएट्स ने लिया था, वो तो यहाँ पर भी वही है, बट बेसिकली दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ मॉर्गेज. वो मॉर्गेज अलग चीज है, यहाँ पर एक अलग चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So this was the first question. Let us go to the next question. So in the first question, what will be the answer? Can the RP add them as financial creditor? I think Yes, sir. answer will be yes. है ना? Yes. Yes, Next देखते हैं. Second question, please read. Was the resolution professional right in asking the COC to decide about including Apex Bank in the list of creditor, or is it his responsibility to take the decision? So basically now we are discussing
कि whose responsibility is to take the decision, because RP decision. RP is asking COC. Let us read the facts again. Please read these facts again. Second para पढ़िए एक बार. Apex Bank has approached the RP to include them as financial creditor in the CIRP of Messrs. Ishwar Switchgears. The RP has picked up the matter with the COC, who returned it to the RP to decide. The RP turns down the request of Apex Bank to include them as one of the creditors. हाँ, तो बस इतना ही facts है. इसमें क्या है? Now the basic fact is, the basic question to be decided is, who is to take that decision? RP is shifting it to the court of COC, and COC is again shifting it to the court of RP. COC, RP बोल रहा है COC को आप डिसाइड कर लो, COC बोल रहा है हमें डिसाइड करना होता, तो RP तुम्हें क्यों बनाते फिर? तुम्हें फीस दे रहे हैं, किस बात की दे रहे हैं? तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है. तो क्वेश्चन क्या है कि was the RP right in asking the COC? This is the basic question. No. No, you should not have asked. अच्छा, कोई रेगुलेशन बता सकते हैं आप इसका, या ड्यूटीज ऑफ बता सकते हैं? ड्यूटीज ऑफ IRP RP बता लीजिए. कौन सा सेक्शन है वो? 18 है क्या है? ऐसा कुछ सेक्शन है ना? हाँ, 18. Formation of COC. है? Section duties 18 of- 1B. Section 29, sir. नहीं सर, सेक्शन 18 1B. इतना आगे कहाँ पहुंच गए? तो 18 एक बार पढ़ लेते हैं सर, क्या बोलता है? 18 का 1B. 18 का 1B बोलता है जी, टेक सच डिसीजंस. ये है क्या? नहीं सर, receive and collate all claims submitted by creditors to him pursuant to Yes, the yes. हाँ. Pursuant to the public announcement. इसी का काम है ये क्लेम्स वगैरह करना, और आगे भी तो होगा ना, टू कॉन्स्टिट्यूट COC. कॉन्स्टिट्यूट तो तभी करेगा ना जब क्लेम एडमिट करेगा सर. हाँ, सी पढ़ लो ना, बी के बजाय सी पढ़ लो. C, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ क्रेडिटर. सी Yes, sir, ज्यादा C. बेटर है. तो मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर भी जो कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये भी उसी का काम है. तो 18(1)(c है ना? 18(1) का 18(c) B हो is the जाए. right answer, sir. क्यों बी के बाद सी तो पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. कमेटी किसका Sir, बना है? बराबर है. Once say admitted only, you will constitute ना. वो तो कह रहा है मुझे COC में लो ना, वो कह रहा है मुझे फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाओ. चलो B एंड C ले लो. मेरे हिसाब से तो C भी है, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ क्रेडिटर. भाई COC कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? इसका काम है, RP का काम है ये. तो 18B ले लो. चलो ठीक है. इसी के रिलेशन में 21A 1 भी ले सकते हैं. हाँ 21 में क्या बोलता जी? हाँ जी, सेक्शन Interim 21 का resolution- 1 सबसेक्शन 1. Interim हाँ. resolution professional shall, after collation of all claims received Yes. against the corporate, determination of the financial position of the corporate debtor, constitute a committee of creditors. हाँ, ये भी यहाँ पे ये और ज्यादा अप्रोप्रिएट है. सारा ही कुछ बोल दिया इसने यहाँ पर. तो ये बेसिकली वो ड्यूटीज में है जी उसकी. हाँ बिल्कुल. तो ही was the RP right? No. Or is it his responsibility to take the decision? So it is his responsibility, है ना? तो हमारा सेक्शन 18 और 20 इसके बारे में बोलता है. सेक्शन 18, सेक्शन 20. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Can a member of COC ask for valuation report along with information memorandum? No, he cannot. Only on receipt of the resolution plans. हाँ जी, He cannot ask for the valuation report before once he receives the resolution plans. Then only the member of the COC can ask for the valuation report. एक बार बता देंगे कौन सा सेक्शन है, कौन सा रेगुलेशन? रेगुलेशन सर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सेक्शन बताओ ना. 5 है सर. ऐसा है? रेगुलेशन 35. 35. हाँ भाई देखो, बिना रेगुलेशन के तो कोई फायदा नहीं ना. ऐसे कहानी सबको पता है. हाँ सही बात है सर. कहानी तो मुझे भी पता है. हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में होना जरूरी है. कहानी से नहीं होगा. 35(2). क्योंकि अभी तो ऐसा है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अभी तो बुक हमारे सामने है ना, हमारे को पता होना चाहिए
कि भाई कहां पर है ये? सेक्शन कौन सा है? Regulation 35, sub-regulation 2. After receipt of resolution plans in accordance with the code and these regulations, resolution professional shall provide fair value and liquidation value to every member of the committee in the electronic form. On receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value and liquidation value and shall not use such values to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under subsection 2 of section 29. It means he has to share, no? After receipt of a resolution plan. ना? आफ्टर रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। हाँ, अभी तो वो कह रहा है कि भाई आईएम के साथ ही दे दो, आईएम के साथ देने के लिए बोल रहा है ना, तो आईएम के साथ तो नहीं दे रहा ना। अभी तो आईएम जब हुआ इशू किया है, अभी तो आरएफआरपी भी नहीं इशू किया, अभी तो रेजोल्यूशन प्लान कहाँ है? अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं आया सर अभी तो आईएम के साथ। ये राहुल द्रोलिया जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहाँ से। सर पटाखे फट रहे पीछे। ऐसा लग रहा है कोई बारिश हो रही है। नहीं राहुल द्रोलिया जी, आप ही यहाँ से आ रही है, लगता है कि बारिश हो रही है, जैसे ओले वगैरह पड़ रहे हैं कुछ। वो कई बार क्या होता है, वो कहीं हाथ लग जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो एनीवे, तो इसमें ये है कि एट दिस स्टेज ही कैन नॉट, he can share it after the receipt of resolution plan. अभी तो they are asking at a very preliminary stage, IM के स्टेज पे ही मांग रहे हैं। तो can a member? No, not at this stage. अच्छा, at what stage the RP has to share? अगला देख लो ना, at what stage the RP is the reply है? हाँ, तो for this ये जो है नेक्स्ट वाला 35(2). हाँ, ये रेगुलेशन 35(2) हो गया। ठीक है जी। अच्छा, कैन ए मेंबर ऑफ सीओसी बी ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट? Yes. बेसिकली क्या है? with approval of the AA. अप्रूवल ऑफ ए कहां से आ गया? राहुल द्रोलिया जी, आप ही के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए अपने को, जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कैन ए मेंबर ऑफ सीओसी बी ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट? पहले तो रेगुलेशन बताइए, कौन सा रेगुलेशन है, कौन सा सेक्शन है भाई? बेसिकली क्या है? barred by 29A. Yes, he should not be barred by 29A. वो तो हो ही गया ना 29A को 12 वो तो नेचुरल है। और फिर क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछना कहाँ जरूरी है? कोई है? मेरे को तो नहीं लगता जरूरी है भाई। कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है, अनलेस इज बार्ड बाय 29A, ही कैन बिकम। Yes. प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर भी बन सकता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि प्रोमोटर नहीं बन सकता। सम पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि प्रोमोटर कैन नॉट बी बिकम ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 29A देखना, वो भी सेक्शन वाइज देखना है। सर प्रोमोटर वो जो प्रमोटर है वाले सर, उसमें है ना, 29 सॉरी एमएसएमई वाले केस में है ना जी प्रोमोटर। जी, नहीं नहीं वो नहीं है उसमें, विलियम जी बताएंगे। विलियम इसमें सर आप सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 पढ़ो। नहीं 29A G has been a promoter or in the management control of the corporate debtor in which preferential transaction, undervalued transaction, extortionate transaction, fraudulent had taken place, in respect of which order has been made by the adjudicating authority under this code. वो तो ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं फिर तो बन सकता है ना। वो तो अगर PUFE हुआ, उसका भी ऑर्डर हो गया तो नहीं बन सकता। Even if PUFE application has been filed but it has not been decided, still he can become a resolution applicant. Very concept of starting everything with a fresh slate and all that. हाँ जी सर section These section people who are 30 incompetent, that's why the company could not like do well and is going. No, it is not like that Devrupa ji, it's not like that। देखिए ऐसा है, default as such does not prove anything। if there is a default, it could be technical default also। so default as such does not prove कि भाई they are fraudulent people or they are dishonest। so on its own you cannot take the assumption that the promoters are dishonest। it could be a business failure also।
It could be failure of a business model. Not Why? dishonest, but incompetent. नहीं नहीं ऐसा भी you cannot allude incompetence because of default alone. सर Anyway, हम तो यहाँ हाँ, आरए Adani is not मेंबर ऑफ सीओसी incompetent. है हम तो हाँ, मेंबर ऑफ सीओसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसका आंसर आपको सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 में मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो सेक्शन 30 सब सेक्शन 5। अब देखो आपका पूरा CIRP रिवाइज हो जाएगा इस तरह से। सर आप जो बोल रहे थे कि कैन ए प्रमोटर बिकम एन आरए, I यस think that is possible only with prepackaged insolvency, ना? नहीं नहीं Not नहीं in the नहीं normal CIRP क्यों process. I नहीं think it is not possible. नहीं बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? देखो ऐसा है, ना, अगर जिसके खिलाफ CIRP चल रहा है वही कैसे बन जाएगा आरए? अरे बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? सर मैं कह रहा हूँ ना, नहीं सर, सेक्शन नहीं 30 यार, सब सेक्शन बिल्कुल 5 नहीं पढ़ होगा। दो आप। आप पढ़ लो ना, आप सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 एक बार पढ़ो तो सही। हाँ जी सर। The resolution applicant may attend the meeting of the committee of creditors in which the resolution plan of the applicant is considered, provided the resolution applicant shall not have a right to vote of the meeting of the committee unless there is such a resolution applicable to the financial creditor. यस इससे कुछ इसका बहुत सारा मतलब है। इसका बहुत सारा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरए वोट भी कर सकता है अगर वो क्या कहता फाइनेंशियल है, क्रेडिटर है। अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो सीओसी का पार्टी नहीं बनेगा, वो वोट भी कर सकता है। अभी तो कुछ लेडी मेंबर्स है नहीं, तो मैं आपको जोक भी सुना देता, इस पर आप हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तो उसमें ये है, क्या बोलता है? वो बोलता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन विच द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ द एप्लीकेंट इज कंसिडर्ड। इसका क्या मतलब है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल नॉट हैव अ राइट टू वोट एट द मीटिंग unless such resolution applicant is also a financial creditor. So they are imagining a situation where a resolution applicant is a financial creditor as well. ठीक है ना? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर तो हो ही सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या, प्रोमोटर भी हो सकता है। 29A ही बार करता है और कुछ नहीं है। अगर उसका कोई कसूर ही नहीं है, भाई प्रोमोटर बन गया, प्रोमोटर बनने से यही थोड़ी है कि वो बेईमान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत आप अज्यूम कीजिए। दिस कंसेप्शन इज रॉन्ग कंसेप्शन कि भाई प्रोमोटर जो है दे आर ऑलवेज डिसऑनेस्ट या उसकी Does it mean like promoter is a different entity than a CD? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। Then it makes a little. Anyway, मैं पढ़ूंगा फिर से। हाँ, Let us park it right now क्योंकि हाँ मुझे हाँ देखना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Right. तो अब एनीवे, तो अभी तो एक क्वेश्चन ये है, कैन ए मेंबर ऑफ सीओसी बी ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट? यस ही कैन। yes. यस। और अभी इसको हम यहाँ लिख देते हैं सेक्शन 30। देखो ऐसा है, जितनी बार इसको पढ़ोगे, हमने पता नहीं 20 बार पढ़ लिया होगा आईबीसी। हर बार जब पढ़ते हैं कुछ नई चीज नजर आती है। हम तो इसको 2018 से पढ़ रहे हैं, अब 4-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। अभी भी पढ़ते हैं, लगता कुछ पूरा समझ में नहीं आया। जब नया पढ़ो नया कुछ लगता है, यार ये पॉइंट तो ये नया था, वो चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, इज द आरपी राइट इन शेयरिंग द आरएफआरपी ओनली टू शॉर्टलिस्टेड पीआरएस? इसने क्या किया, सभी को नहीं दिया, शॉर्टलिस्टेड। लेट अस अगेन गो बैक टू द केस स्टडी। हाँ, ये पढ़िए जरा राजशेखर जी, थर्ड पैरा। Yes, sir. Out of the 3 rejected prospective resolution applicants, 1 prospective resolution applicant raised objection, which are clarified by the resolution for RP. The RP issues us the final list of prospective resolution applicant to COC. That is related to second paragraph, sir. The out of 6, the question is related to out of 6 prospective resolution applicants, 3 prospective applicants, including the member of the COC, are shortlisted as by the resolution professional, and the provisional list of eligible prospective resolution applicant is submitted to COC. And to all, second para, I'm sorry, second para, yes. Yes, yes. Yes, sir. So basically, what the RP has done, RP has issued the provisional list to all the prospective resolution applicants. ये जो प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट मतलब 3 शॉर्ट लिस्टेड। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हियर इज whether this prospective resolution, whether the list
is to be submitted to all the resolution applicants, whoever submitted the application, or only to provisionally selected. पहले तो regulation देखते हैं, which is the related regulation to this. Regulation या section. 36B. 36A. B, sir. 36B. Request for resolution plans. The first subsection 1. The resolution professional shall issue the information memorandum, evaluation matrix, and a request for resolution plan within 5 days of the date of issue of the provisional list under subsection subregulation 10 of regulation 36A to every prospective resolution applicant to the provisional list. Every prospective resolution applicant who Yeah, has here the question contested is the decision of the resolution professional against non-inclusion in the provisional list. सबको देना पड़ेगा. हाँ, कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन से में पढ़ रहे हो? 36B. 36D. B, sir. B for Bombay. Okay. Regulation, sir, regulation. हाँ, regulation है. Request for resolution plan ना, RB है ना? Yeah. 36B. Okay. Sir, Every prospective resolution applicant and every prospective resolution who has contested the decision of the RP against Correct. its non-inclusion, दोनों को ही देना पड़ेगा. नहीं पर सर यहाँ कंटेस्टेड का कोई आया नहीं ना, ये किसी ने कंटेस्ट किया ऐसा तो कुछ आया नहीं. नहीं, एक ने बोला ना, एक ने अच्छा, वो आगे ऑब्जेक्शन ने किया ना रेज. जिसने ऑब्जेक्शन किया उसको देना पड़ेगा. हाँ, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा. Provisional list किधर है? Shortlisted. He received 6 applications. He received 6 applications. Only 3 applications he submitted to the COC. That is a mistake. Yes. No. नहीं, that is not the No, no. mistake. वो तो shortlisted ही देगा. Shortlisted. He has to Shortlisted को present देगा. all the. Like, A he has to contested submit person. all the 6 plans to COC. He has mentioned the note and submit all the 6 plans to COC. अभी ऐसा है ना, COC has to decide. एक मिनट राजशेखरन जी, ऐसा है, let us read the question again. अभी पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है ना? Is the RP right in sharing the RFRP only to shortlisted request for resolution plan? So the question here is, with whom this RFRP is to be shared? No. RFRP is to be shared with only with shortlisted prospective resolution applicants And or the to one- others also. So that is the question. Contested. Contested also. Not others. Contested the decision. I think shortlisted. correct. Shortlisted No. and who has contested the decision. Yes. हाँ, The तो as per the 36 provision list, section 100 you can 36 36B1 है ना? तो 36B1 बोलता है, तो इसका मतलब ये इसका तो सही नहीं है ना, इसने तो शॉर्ट लिस्टेड को ही भेजा ना, सिर्फ 3 को भेजा इसने, 3 के बजाय इसको 4 को भेजना चाहिए. 4 को भेजना था. यही है ना आंसर? Correct, sir. B. है नहीं, 1 ही कर लो, 1 दोनों पढ़ लो. Okay. 36(1) में सर दोनों है ना. हाँ, 1 में दोनों आ गए. तो अगर हम PRP को भी PRA को भी देना है और जो कंटेस्ट करे उसको भी देना है. हाँ, इसने तो खाली PRA को दिया, तो गलत था ना ये. हाँ. तो इसको हम नो बोलेंगे. अब अगला पढ़िए. 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. एक बार स्टडी दोबारा पढ़े सब, तभी आंसर देते हैं. हाँ, दोबारा पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा से पढ़ेंगे. हाँ जी, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए राजशेखर जी. 7th क्वेश्चन. Why does the AA direct IBBI to initiate appropriate action against the RP? हाँ, अभी हम Why does- दोबारा, अभी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. पहले लास्ट से पढ़ते हैं, हम लास्ट से बैक जाएंगे. क्या बोलता है? AA rejects the plan approved by COC and directs IBBI to look into the conduct of the applicant and initiate appropriate action against the RP. Now, based on this case study, what are the shortcomings you notice against RP? On first page, this is the first page. On first page, Not including Apex Bank as a financial creditor. yes. So first point is non-inclusion of Apex Bank as FC. ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा उसका कमी क्या था? Second is non-sharing of RFRP. RFRP with the contested applicant. Yes, ठीक है. और ये वैल्यूअर वाला भी कुछ पॉइंट था क्या? ये उसका था, ये शेयरिंग
ये वो तो उसने मना कर दिया ना। मना अच्छा, कर वो दिया तो मना उसने। कर दिया, ठीक है। और क्या पॉइंट था, और भी कुछ था क्या? सर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स उसने Asking खुद COC whether to include Apex. यस, उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड द सीओसी, आरपी आस्क्ड द सीओसी कि उसके अपना ड्यूटी था 18 और 20 में, उसने अपना ड्यूटी, ही एब्डिकेटेड हिज रिस्पांसिबिलिटी इन फेवर ऑफ सीओसी। Tried to shifted his responsibility to ये COC. दोबारा डिस्टरबेंस आ रहा है सर आपके यहाँ से, ये द्रोलिया जी आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। म्यूट हो गया सर, म्यूट उन्होंने कर दिया। हाँ म्यूट कर दो, हाँ हाँ हाँ, वो हो नहीं। जाता है कई बार। क्या होता है, मान लो आईपैड से कर रहे हैं, वो हाथ लग जाता हाथ है, लग जाता है। कई बार पता नहीं होता, कोई बुक है, नोटबुक आ गई उसके ऊपर, ऐसा हो जाता है। बंदा सोचता है मेरी तरफ से तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मेरे यहाँ तो शांति है, वो चक्कर है। बट हमें यहाँ पता चलता है, हमें यहाँ दिखाता है किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है, ये ना। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट क्या था? आरपी एब्डिकेटेड हिज रिस्पांसिबिलिटी इन फेवर ऑफ सीओसी। भाई जो उसकी ड्यूटी है उसको खुद ही करनी है, ये नहीं कि आप सीओसी से पूछने लग जाओ। ये थर्ड पॉइंट था उसके अगेंस्ट में। और भी कुछ था क्या? हाँ और भी है ना सर, इम्पोर्टेंट हाँ। पॉइंट तो लास्ट में वो सर इवैल्यूएशन लास्ट में सर बैंक गारंटी वाला वो पढ़ना हाँ, पड़ेगा बैंक मुझे, गारंटी वहां पे वाला, है कुछ। correct। बैंक गारंटी वाले में है कुछ, मुझे अब याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ नीचे है, और नीचे नेक्स्ट हाँ, इसी में, बिल्कुल इसी ठीक में। है, हाँ राइट। अब ये उसने क्या, यहाँ पढ़ ले, पहले पढ़ लेते हैं, इसके अगले पेज पे जाएंगे फिर। इसमें क्या है, जो आरएफआरपी में देयर इज ए कंडीशन, and if there is any deviation from the condition, it has also to be approved. But without getting approval, he submitted the resolution plan. RFRP में क्या बोला, 15% का बैंक गारंटी दो, ठीक है, for the amount payable to creditors. ये कहां पर लिखा है? ये सेक्शन 30 talks of this. Section 30 says that okay, the OCs have to be paid at least the liquidation value or the amount which is payable to them as per section 53. ठीक है ना? ये section 30 में लिखा है कि while approving the resolution plan, this fact has to be seen by the RP because he is having the liquidation value, so he can very well compare. Our resolution applicant may not be aware कि what is the liquidation value, ठीक है ना, but he is aware. अब उसने बोला कि भाई 15% का आपको बैंक गारंटी देना है टिल एट लीस्ट 18 मंथ्स और टिल कंप्लीशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। और उसने दिया क्या, वो देख लेते हैं। उसने दिया बैंक गारंटी फॉर 10%, यहाँ पर बोला था 18%, ये 15% का, और दूसरा बोला था यहाँ पर एटलीस्ट 18 मंथ्स और टिल कंप्लीशन ऑफ आर दिस रेजोल्यूशन प्लान। यहाँ पर कुछ कंप्लीशन का बात नहीं किया, उसने सिर्फ 18 मंथ्स का ही दे दिया। तो यहाँ दोनों जगह पे डिवीजन किया। तो बैंक गारंटी में जो है वो डिविएशन हो गया, ये डिविएशन फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ आरएफआरपी। अब आरएफआरपी में अगर कोई डिविएशन हो तो वो उसके लिए कहां जाना होता है? सपोज as per the resolution plan which is submitted is not as per RFRP, because RFRP and this evaluation matrix is decided by the COC. So based on that alone, the plans are coming. तो अब ये है कि if there is a deviation in RFRP, तो whom to approach? RP will approach COC RP again. has to, sir, the report which RP submits, RP has to evaluate all the resolution plans, correct? हाँ. And after evaluation, he has to submit that report to the COC. Which is in And then compliance. COC will Which is in approve compliance that. with the RFRP, but he did not point out this fact actually. He did not point out, and that is where the problem came. हाँ, तो what is the related regulation? भाई कहीं लिखा भी तो होगा ना। 36A में ही है वो 4A 36B में 4A सॉरी 36B में 4A। हाँ जी, हाँ पढ़ लीजिए एक बारी। सर मेरे यहाँ पे अभी there is no नहीं कोई बात नहीं, आप राजशेखरन जी आप पढ़िए, राजशेखरन जी आप पढ़िए। 36B 4A रेगुलेशन, इसे पता भी चल जाता है। The request for resolution plan shall require the resolution applicant, in case its resolution plan is approved under subsection 4 of section 30, to provide a performance security within the time specified therein, and such performance security shall stand forfeited if the resolution applicant of such plan, after its approval by the adjudicating authority, fails to implement or contribute to the failure of implementation of that plan in accordance with the terms of the plan and its implementation schedule. आप 5 भी पढ़ लो साथ में।
5 भी पढ़ Any लो। modification in the Yes. request, This is more appropriate. 5 is more appropriate because there was a Any- modification. any modification in the request for resolution plan or evaluation matrix issued under sub-regulation 1 shall be deemed to a fresh issue and shall be subject to timeline under subsection sub-regulation 3. As provided such modification shall not be made more than once. तो अभी क्या है कि जो सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द आरएफआरपी, ठीक है ना। तो इन दिस केस एनीथिंग कैन हैपन। सीओसी में आस्क फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स आल्सो। अगर टाइम परमिट होगा तो वो बोलेगा और रेजोल्यूशन प्लान्स मंगा लो। दिस में भी रिजेक्टेड। इसमें तो क्या किया इन्होंने, उसी को अप्रूव भी कर दिया। जो शॉर्टलिस्टेड है, शॉर्टलिस्टेड में ये डेफिशिएंसी था ना, दिस डेफिशिएंसी वाज इन द शॉर्टलिस्टेड प्लान ओनली। Shortlisted, yes. हाँ वो 10% को कर ही नहीं सकता ना सर। हाँ 10% कर ही नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। तो अब इसमें ये है कि भाई ये इसी सब के कारण उसकी लंका लग गई। तो ए ने जो बोला ठीक ही बोला। तो ये हमारा हो जाएगा रेगुलेशन 36B। इसमें 4A और 5 दोनों ही पढ़ सकते हो आप। तो अभी देखते हैं कुछ आंसर्स। गिरीश जी आपने भेजे थे कि इन्होंने भेजे थे आंसर्स? आइए आंसर्स कुछ आए हैं मेरे पास। As the claim against the guarantee has been invoked by Apex Bank, it is a debt for Ishwar Switchgears and it should have been added as subsidy। पहला तो सही भेजा है। सेकंड देखो लोग कितना कितना आंसर भी भेज रहे हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। ये आंसर पहले ही आ चुके थे, मैंने दिखाया नहीं आपको। सेकंड क्या बोलता है, was the RP right in asking the COC? मैंने अभी खुद भी नहीं पढ़े, मैंने कहा जब डिस्कस करेंगे तभी पढ़ेंगे। Answers came to me but I did not read. Was the RP right in asking the COC to decide about including? RP is duty bound for compilation of list and constitution, ठीक है ना। This is not the decision but of RP, therefore RP erred. Third, can a member of COC ask for valuation report? As COC member can be a resolution applicant, they cannot ask for valuation report with IM to maintain level playing field for all prospective resolution applicants. At what stage the RP has to share the valuation report? RP has to share the valuation report to the COC at the time of sharing evaluation metrics with the shortlisted resolution plans for the evaluation. ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसके साथ एक और क्वेश्चन बता दो। चलो, ये जो फेयर वैल्यू है और लिक्विडेशन वैल्यू है, क्या ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बताएंगे नहीं बताएंगे? नहीं सर, नो सर, नो सर। हाँ, सिर्फ सीओसी को बताएंगे, बाकी को नहीं बताएंगे। वैसे अच्छा, भी सर वो जब तक प्लान नहीं आ जाते तब तक तो बताएंगे ही है। हाँ, जब तक प्लान नहीं आ जाते तब तक तो बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला Sir, देखते हैं। I have one doubt. अगर COC को बताते हैं and FC wants to become an RA, then what happens? He has already submitted the plan, na? He cannot change the plan now. No, about others. वो किसी को भी नहीं बताया ना उस टाइम तक, बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन। He cannot share that. Yes. No, about the fair value and everything. No. If the RA is part of COC, then if these informations are shared with COC, that Only after he cannot be shared. Yeah, only after plans are received. No, not along with the resolution plan for approval, then only they'll share with that. Yes. Basically, it remains with RP only. Sir, can we go to the previous question, previous slide? Yes. That answer is little bit, I have some problem with that. In the last answer, the question number 4, it says that the RP has to share valuation report to the COC at the time of sharing evaluation matrix with the shortlisted resolution plans for evaluation. I think it is not evaluation matrix because evaluation matrix is पहले ही decide होता है. It is the evaluation of the RP. Correct ना? So I think basically नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा होता है। evaluation matrix होता क्या है? Evaluation matrix is nothing but quantitative and qualitative criteria on the basis of which marks are awarded. अब यहाँ जो ये सबमिट कर रहा है ना evaluation matrix, ये फिल्ड अप कर रहा है। वो पहले खाली होता है। ठीक है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो COC has to approve.
Means हाँ, RP has to prepare it and Evaluation share. COC करता है. ऐसा है ना, जो वोटिंग होती है, इवेल्यूशन, देखो वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग में क्या होता है, ये मार्क्स असाइन होते हैं इवेल्यूशन Correct. मैट्रिक्स में. इफ यू हैव सीन माय रिकॉर्डिंग, तो इन इवेल्यूशन मैट्रिक्स सीओसी डिसाइड्स अबाउट द क्राइटेरिया. ठीक है भाई, ऑफ वो पहले अप फ्रंट क्या कितना पैसा दे रहा है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नेटवर्थ क्या है ना, पहले कहीं वो उसका कोई इनएलिजिबल तो नहीं रहा किसी प्रायर केस में. So these are some of the criteria which are fixed by the COC based on the nature and complexity of the scale of operations of the business. ठीक है ना. अब वो लेकिन खाली होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसमें इवोल्यूशन मैट्रिक्स का, जिसमें से सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं. नाउ वंस दिस रेजोल्यूशन प्लान्स आर ओपन, बेस्ड ऑन दैट मार्क्स आर अवार्डेड टू ईच ऑफ देम. कि भाई 10 में से इसको 6 मार्क्स देंगे. ऐसा है ना, हो सकता है वो बोले भाई अप फ्रंट आप 50 करोड़ दे दो, एक बंदा कह रहा है मैं तो 20 करोड़ दूंगा, 50 करोड़ नहीं दे रहा, तो उसके बेसिस पर आपको उसको 40% मार्क्स अवार्ड करने हैं. तो बेस्ड ऑन दैट दे अराइव एट सर्टेन नंबर्स. देखो सीओसी जो वोटिंग करता है, जैसे यू माइट हैव इवन सीन इन केस ऑफ ये जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है, टेंडरिंग में क्या होता है, हम एक शीट बनाते हैं ना, फाइनली वी मेक अ कंपैरेटिव चार्ट. सपोज वी आर रिसीविंग टेंडर्स फ्रॉम 5 पीपल, देन हाउ टू डिसाइड, बिकॉज ऑल देयर टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट. कोई बोलेगा मैं 2 साल में इंप्लीमेंट कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 6 महीने में इंप्लीमेंट कर दूंगा, एक बोलेगा जी मैं 100 करोड़ अपफ्रंट दे दूंगा, दूसरा बोला मैं आई विल गिव 50 करोड़. सो हाउ टू कीप देम एट पार. So this evaluation criteria, evaluation matrix is the criteria based on which they are brought to the same level and marks are awarded. और इन मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी वोटिंग होती है कि सपोज प्लान ए हैज गॉट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, प्लान बी हैज गॉट 80 मार्क्स, इस तरह से वोटिंग होती है. बट सपोज 2 प्लान्स हैव गॉट सेम मार्क्स, इसका भी 70 मार्क्स है, उसका भी 70 है. तो ये सब उसके अंदर भी दिया हुआ है. अगर आप देखोगे वो जो प्री पैक है उसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है आपका. तो इवैल्यूएशन, दिस इज द फील्ड अप इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बेसिकली व्हाट इज टॉकिंग. और जो पहले जाता है, जो आरएफआरपी के साथ जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को भेजा जाता, उनको तो खाली भेजा जाता ना कि उस क्राइटेरिया में दे हैव टू जज देम अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया. बेसिकली ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन ए मेंबर ऑफ सीओसी बी ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट? यस, ए मेंबर ऑफ सीओसी कैन बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. नेक्स्ट देखते हैं. मेरे आंसर नहीं है ये, किसी और ने लिखे हुए हैं, बट ठीक ही लग रहे हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इज द आरपी राइट इन शेयरिंग द आरएफआरपी? ओनली टू द आरपी वाज नॉट राइट. ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा. व्हाई डज द ए डायरेक्ट आईबीबीआई, ए डायरेक्टेड द आईबीबीआई टू इनिशिएट, इनिशिएटेड हो गया, इनिशिएट होना चाहिए, टू इनिशिएट एक्शन as RP accepted the deviation in value and terms of bank guarantee. If there is a change in condition, there should have been fresh submission of resolution plan to maintain level playing. ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी थी जो उसकी इंफॉर्मेटिव थी आरपी की. ठीक है ना, नॉन इंक्लूजन ऑफ एपेक्स बैंक, नॉन शेयरिंग ऑफ आरएफआरपी, या फिर ये है कि एब्डिकेटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेवर ऑफ सीओसी वगैरह वगैरह. ठीक है जी. अच्छा, ये तो हो गया, ये केस स्टडी कंप्लीट हो गया. अब दूसरा केस स्टडी का क्या पोजीशन है? दूसरा केस स्टडी आज करें, कल करते हैं उसको ना, ज्यादा हो जाएगा, वो लंबा केस स्टडी है. बट दैट केस स्टडी एवरीवन हैज गॉट, वो मैं दिखा देता हूं आपको. और ये वाला भी दोबारा शेयर कर दूंगा मैं. ये जो है कहाँ था, ये होगा मेरे ख्याल. ये 1 मिनट स्टॉप शेयर करके ना मैं दोबारा शेयर करता हूँ. ये तो सेम ही है, ये नहीं थी, वो दूसरी थी केस स्टडी. 1 मिनट. केस लॉ ऑन आईबीसी अपडेटेड वन, ये कौन सी है? ये भी नहीं है, दूसरी केस स्टडी. वो जो सुकून से वाली जो हमने पढ़ी थी, ओयो वाली जो स्टोरी थी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Oyo wala, है ना. हाँ हाँ, Yes. तो उसको कल करते हैं फिर, है ना. Yes, अभी sir. अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा स्टडी डिस्कस करने में. नहीं, कल करेंगे सर, है ना. हाँ, तो मेरे हिसाब से आपने पढ़ी ली वो होगी वाली केस स्टडी भी, है ना. सर वो पढ़ा, एक्चुअली उसमें क्वेश्चंस मिसिंग है. कौन सा? ओयो वाले केस स्टडी में क्वेश्चन आपको बनाने हैं. अब मैंने आपको बेसन दे दिया, चीनी दे दी, अब आपको हलवा भी आपको दे दें, आप खा लो सिर्फ, वो तो काम चलेगा. अब धीरे धीरे आपको बेसन चीनी पकड़ा दी जाएगी और हलवा खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ.
ऐसे थोड़ी होगा कि मैं सभी कुछ बना के आपको देता रहूंगा, है ना। तो अब आप खुद बनाओ। देखो ऐसे है, कितने 25 पीपल आर अटेंडिंग, एक एक क्वेश्चन भी डालोगे तो 25 क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें। सारे तो नहीं डालेंगे, 10 लोग भी डाल दें 25 में से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, बन गई केस स्टडी है क्या, डालो ना, है कि नहीं। और जो नहीं डालोगे वो मैं पूछ लूंगा आपसे, उसमें क्या वो जवाब देने है।